The 56th question we have, with reference to trade-related investment measures, which one of the following statements are correct? कि ट्रिम्स से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? So these are the statements. Statement 1 says quantitative restrictions are on import by foreign investors are prohibited. They apply to investment measures related to trade in both goods and services. They are not concerned with the regulation of foreign investments. So as we know, WTO is a regulator with respect to international trade. And under different agreements of different rounds, there is Nairobi round, and there is Uruguay round, Doha round. There are several rounds of WTO. After several rounds of WTO, several agreements emerged. One such agreement was GATS, which was only confined to trade in services. Then we had one such agreement known as TRIPS, which was confined to intellectual property rights. And another one was TRIMS. TRIMS evolved because it was felt that there is a very close correlation between trade and investment. So in order to protect international investors from being discriminated in the matters of investment, this agreement was evolved. Try to understand this like from this example. Suppose it is country A and there's an international institution known as XYZ. It wants to invest in country A, suppose in manufacturing of cars. Okay, but then there is a domestic investor known as ABC. It too wants to invest in cars, wants to manufacture cars. तो कहीं ऐसा ना हो कि कंट्री ए इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसकी वजह से एबीसी विल बी बेनिफिटेड एंड एक्सवाईजी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड. टू स्टॉप सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, ट्रिम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो पहली चीज इसमें ये कही गई थी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट दिस एग्रीमेंट will be confined only to the trade of goods and not of services. So statement 2 is incorrect. Based on that, we can eliminate the options and we will be left with only option C as the correct answer. So this is one way of answering the question कि अगर आपको पता है कि ट्रिम्स केवल गुड्स से है या फिर ट्रिप्स केवल सर्विसेज से है, then you can comfortably answer the question. Sorry, ट्रिप्स नहीं, वो गार्ड्स. ट्रिप्स is with IPR. So then you can comfortably answer the question. But for the explanation, let's go through statement 1 and 3 why they are correct as we have deduced right now. तो ये जो ट्रेड होगा वो केवल गुड्स में होगा. अगर गुड्स में ट्रेड करने के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है. ठीक है. और डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके की नहीं हो सकती है? बहुत तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है. लेट्स इरेज ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पे वही एग्जांपल, एक कंट्री ए है, इसमें एक इन्वेस्टर है XYZ एंड वी हैव वन इन्वेस्टर ABC. This is domestic investor. Okay. So one way of discriminating XYZ is placing quantitative restrictions. कि ठीक है, आप अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ठीक है, बट इन्वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये अपने प्लांट खोलेंगे. प्लांट को रन करने के लिए इनको मशीनरीज चाहिए होगी और उनके पास कोई एक फिक्स सेट ऑफ मशीनरीज होगी, इक्विपमेंट्स होगी जिसको वो यूज करना चाहेंगे. सो व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन हैव देम इंपोर्टेड इन कंट्री ए फॉर द ऑपरेशन ऑफ दिस प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स. अब ऐसा नहीं हो सकता कि कंट्री ये कहने लगता है नो 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 यू कैन नॉट डू दिस, आपके इतने इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, इतने ही मशीनरीज आ सकती हैं, इतनी ही चीजें आ सकती हैं. इन दिस मैटर country A will not be allowed to place quantitative restrictions. What country can do is you can place qualitative restrictions and you can impose custom duties. कि आप ये इंपोर्ट करवा रहे हो हमारी कंट्री में, इक्विपमेंट्स और कैपिटल गुड्स करवा रहे हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सेक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, so you will have to pay custom duties. But country cannot say that you can import such kind of equipment to certain extent. You cannot place quantitative restrictions. Similarly, the statement 3 says, so statement 1 is correct. The quantitative restrictions prohibit TRIMS के अंडर. Statement 3 कह रहा है
they are not concerned with regulations of foreign investment. कि foreign regulation investment जो होती है country की उसके अंदर TRIMS नहीं आता है. That is definitely correct. Why? Foreign investment का मतलब क्या हुआ? Foreign investment अब बहुत तरीके से होता है इंडिया में, and for the matter of fact बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग तरीके से होता है. Generally there are two. One is through FII and FPI, and another is FDI. Okay, but again, neither the FII nor the FDI is confined only to goods. केवल गुड्स में नहीं हो सकता, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में होता है. But as we know, TRIMS is only related to goods. So foreign investment through foreign regulations, मतलब domestic regulations के through इनमें FII, FDI की foreign investment regulation और TRIMS के अंदर foreign investment की regulation, both are different subjects. So TRIMS, any investment under TRIMS is not regulated under foreign investment regulations. इसके लिए separate policies होती हैं. So statement 3 is correct. As we have deduced earlier that on the basis of statement 2, if statement 2 is incorrect, then we are only left with option C. But this was the explanation why statement 1 and statement 3 was correct. So this was our 56th question.